वेलकम टू नॉलेज अपडेट चैनल। एमएसएमई फॉर्म 1 एक ये हाफ ईयरली रिटर्न्स है। कंपनी को ये रिटर्न हर एक हाफ ईयर एंड में विद इन 30 डेज फाइल करना पड़ता है। रिसेंटली ऑन 15 जुलाई 15 जुलाई 2024 ये इसमें अमेंडमेंट हुआ है। ये अमेंडमेंट के कारण बहुत बड़ा चेंज है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा फॉर कंप्लायंस फॉर 30 सितंबर 2024 एंड देयर आफ्टर। सो लेट अस अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो कि अमेंडमेंट क्या है, फॉर्म में चेंज क्या है और उससे प्रैक्टिकली हमें क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका इम्प्लीकेशन बहुत बड़ा हो सकता है बिकॉज ऑफ 43B(h) एंड अदर प्रोविजंस। सो लेट अस फर्स्ट लुक एट द फॉर्म, किसको ये फॉर्म फाइल करना है। सो पैरा 3 which mentions that every specified company shall file a return as per MSME Form-1 annexed to this order by 31st October for the period from April to September and by 30th April for the period from October to March. So para 3 talks about that every specified company shall file a return. अब स्पेसिफिक कंपनी का मतलब क्या हुआ? तो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी। नाउ let us talk about very important change, that is amendment which has been noted on 15 July 2024। उसमें क्या किया उन्होंने, एक प्रोवाइजो ऐड किया पैरा 3 के अंदर। सो पैरा 3 वाज साइलेंट अबाउट व्हाट इज टू बी फॉर विच कंपनी इट इज एप्लीकेबल। प्रोवाइजो जो ऐड किया वो प्रोवाइजो क्या कह रहा है? It is said that provided that only those specified companies which are having payments pending to any micro or small enterprises for more than 45 days from the date of acceptance or date of deemed acceptance of the goods or services under section 9 of MSMD Act 2006 shall furnish the information in MSME Form 1। तो प्रोवाइजो इज टॉकिंग अबाउट दैट एवरी कंपनी जहां पे आपने मोर देन 45 डेज से ज्यादा आपने एक्सेप्टेंस और डीम टू बी एक्सेप्टेंस के बाद में पेमेंट किया है, वो हर एक कंपनी को ये फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। तो कंट्रोवर्सी जो भी हो रही है उसमें ऐसा है कि इन केस अगर मेरा ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर 24 if there is a delay but on 30th September 2024 there is no outstanding payment, so am I required to file form MSME 1? बिकॉज जब हम MSME फॉर्म 1 देखते हैं उसमें उन्होंने ड्यूरिंग द पीरियड की इंफॉर्मेशन कैप्चर किया है। सो द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज क्वेश्चन और कंसर्न इज दैट किस किस केस में हमको ये फॉर्म फाइल करना है। देर आर अ डिफरेंट ओपिनियंस आर अवेलेबल। देर आर फ्यू who are saying that अगर आपने मोर देन 45 डेज के में पेमेंट किया है इवन ड्यूरिंग द पीरियड, in that case you have to file the form even though there is no outstanding on 30 September 24। However, in my view, the word which is may use is the pending. Pending means as on particular date, if it is a pending to be paid, then only it should become. So it says provided that only those specified persons, companies which are having payment pending to any micro or small enterprise. So those is important. First thing is that this form is applicable only in case the outstanding amount, there's a pending amount, is to micro or small enterprise having more than 45 days from the acceptance or deemed to be accepted। तो अगर वो सी वर्ड इज MSME, उसमें माइक्रो स्मॉल मीडियम भी आ गया है, बट यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं इट्स ओनली फॉर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज, मीडियम की बात यहाँ पे नहीं है। अगर पेमेंट टू सप्लायर वो रजिस्टर्ड माइक्रो और स्मॉल और 30 सितंबर 31 मार्च को अगर वो मोर देन 45 डेज आउटस्टैंडिंग पेमेंट है फ्रॉम द acceptance date, then in my view this form is required to be filed। So let us now look at the इसमें additionally why I believe that this is only for this case। just look at the heading of form।
The form heading mentioned it's a form for furnishing half-yearly returns with the registrar in respect of outstanding payment to micro small. Again, the heading itself talk about outstanding payment. Even point 3 of MSME 1, which mentions that regular half-yearly return of outstanding dues more than 45 days to micro or small enterprise suppliers. So यहाँ पे वर्ड लिखा है outstanding dues more than 45 days. Please report all outstanding amount that are due for more than 45 days or were liquidated after 45 days of acceptance of good or service. तो वर्ड यहाँ पे all outstanding amount है which are more than 45 days or liquidated after 45 days. Now this is what para point 3 is mentioning. So in my view, the MSME 1 should be filed by company in case of outstanding amount to micro small enterprise where it has been overdue as per MSME law by more than 45 days. Now let us look at the what is the change. I think ये जो information है what to report बहुत बड़ा change है. Lot of information is to be provided because it is providing a tabular format where you are supposed to provide supplier wise information, and that also it captured. First is a pan of supplier, then paid within 45 days. Now यहाँ पे confusion ये हुआ विभाय because why they talking about the paid within 45 days. So in my view, once you are required to file a form, in that case आपको जो सप्लायर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट मोर देन 45 डेज है वो सप्लाई की इंफॉर्मेशन कैप्चर करनी है. बट इन दैट केस यू टू प्रोवाइड एवरीथिंग फॉर द पीरियड ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल मेरे 10 सप्लायर्स है, 10 सप्लायर्स का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है और 10 में से 4 सप्लायर्स है जो रजिस्टर्ड माइक्रो स्मॉल है. 4 रजिस्टर्ड माइक्रो स्मॉल में से 3 रजिस्टर्ड माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज है जिसका मोर देन 45 डेज हो गया है. तो उस केस में मुझे 3 रजिस्टर्ड माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज जिसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट 30 सितंबर 2024 है, जहां पे इट इज आउटस्टैंडिंग मोर देन 45 डेज फ्रॉम द एक्सेप्टेंस और ड्यू टू एक्सेप्टेंस डेट, उसकी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे देनी है. बट व्हेन आई गिव फॉर दिस 3 सप्लायर्स आई हैव टू प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन फॉर द पीरियड. तो ये 3 सप्लायर का पान नंबर जी, उसमें फॉर ड्यूरिंग द पीरियड हाउ मच अमाउंट इज पेड विद इन 45 डेज, how much amount is paid after 45 days, what is the outstanding amount for 45 days or less, and what is the outstanding amount for more than 45 days. तो जो सप्लायर आपने सिलेक्ट किया, जो सप्लायर की इंफॉर्मेशन दिखाना है, that for that supplier you to provide everything during the period, as on reporting date, invoice wise, more than 45 days outstanding, less than 45 days outstanding, and then reason for delay. So this is what is the interpretation. Obviously there is no other information is available, so this in my view should be the most important thing. Now in this new template they also have provided option to import Excel template because number of suppliers and information can be bulky, so it can be done by way of the Excel templates that can be used for importing information. Now this all provide us a very very important thing. अगर हम ये सब चीज कर रहे हैं, so ऐसा practically हमें क्या ध्यान में रखना पड़ेगा. This should not be taken only as one way for compliance. काफी क्या होता है कि फॉर्म फाइल कर दिया, काम खत्म हो गया, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो ओनली फॉर्म फाइलिंग नहीं है, इसकी काफी सारी इंप्लीकेशन हो सकती है. फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड, एज आई मेंशन्ड इट इज विद इन 30 डेज. हाफ ईयरली फॉर्म है, 30 सितंबर एंड 31 मार्च, विद इन 30 डेज आपको फॉर्म फाइल करना है. देन पेनल्टी, अगर आपने ये फॉर्म फाइल नहीं किया है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि प्लीज अंडरस्टैंड आपको कब फॉर्म फाइल करना है. सो अगर आप फॉर्म फाइल नहीं करते हो तो 20,000 रुपीज फॉर नॉन फाइलिंग फॉर्म एंड रुपीज 1,000 पर डे ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज. प्लस यू ऑल्सो हैव टू लुक एट द इम्प्लीकेशन 43BH बिकॉज अब जो नया प्रोविजन है सेक्शन में, यू आर अवेयर अबाउट दैट 43BH also talks about the disallowance. Now in 43BH disallowance is also throughout the period.
लास्ट ईयर का फर्स्ट ईयर था, तो प्रोबेबली यू मे हैव सीन बेसिकली एज ऑन रिपोर्टिंग डेट, हियर आल्सो यू कैन सी एज ऑन रिपोर्टिंग डेट्स ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 31 मार्च और 43 एच के लिए 30 सितंबर 2024 का आप जो रिपोर्टिंग कर रहे हो, प्रोबेबली इफ इट इज पेड विद इन द फाइनेंशियल ईयर, नो इश्यूज, बट एज ऑन 31 मार्च 2025 व्हेन यू हैव गिवन इंफॉर्मेशन, प्लीज बी केयरफुल कि इसका इम्प्लीकेशंस आपको 43 एच में भी लेना पड़ेगा. And next, also a very important thing, we have to also look at the annual report disclosures. As for MSME law, there's also need to provide the information of the MSME paid outstanding amount more than 45 days, interest, and other informations. Plus, on the face of balance sheet, we have to provide the trade payable classification into two parts, which is to micro small and other than micro small. तो MSME फॉर्म वन जो है वो अपने को, वी डोंट हैव टू लुक एट ओनली वन कंप्लायंस ऑफ आरओसी फॉर्म, इट इज मच मोर देन दैट. एक आरओसी कंप्लायंस फॉर्म के साथ में इसका इम्प्लीकेशन देखना है आपको फ्रॉम एमएसएमडी लॉ कंप्लायंसेस, वेयर इंटरेस्ट मे बी रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय एमएसएमडी लॉ इन केस ऑफ डिलेड पेमेंट, plus 43B(H) disallowance, plus annual report disclosures, and then on the face of balance sheets. ये सब चीज को मिला जुला के करना पड़ेगा. प्लस ये जो 15 जुलाई 2024 में जो अमेंडमेंट हुआ है, उसके कारण द इन्फॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड इज मच मोर डिटेल. सो वी शुड स्टार्ट as early as possible, contact our clients, and then we can ask them to provide information uh, as as early as possible in the format which is required. So Excel template can be used, which has been provided under the MSM form. So thank you so much. All the best.